हाय। सो रिसेंटली मेरी मम्मी को बी स्टिंग हुआ। बी स्टिंग मतलब उन्होंने बी के ऊपर अपना पैर रख दिया और उसपे उसने जाके बहुत तेज उनको काटा। जब ये काटा तो उनको थोड़ी देर में जहां पे काटा था वहां पे बहुत जलन होने लगी और फिर धीरे धीरे उनकी पूरी बॉडी में भी खुजली होने लगी और वो आई एंड शी सेड कि पूरी बॉडी में इचिंग हो रहा है। एंड फिर उसके बाद में उन्होंने अचार उस पे लगा लिया कि पुरानी कहावत है कि आम का अचार लगाने से वो वो बढ़ता नहीं है ना। फिर मैंने उनको बोला कि भाई आप एंटी एलर्जिक लो बिकॉज पूरी बॉडी में इचिंग हो रही थी। सो वी गिव द एंटी एलर्जिक एंड उनके जो सिम्टम्स हैं वो सबसाइड हो गए। पैर में जो इचिंग हो रही थी वो भी ठीक हो गई। लेकिन 3 घंटे बाद में उनको वहां पे जहाँ पे काटा था वहां पे बहुत तेज दर्द होने लगा और धीरे ही धीरे वो पूरा पैर सूज गया और उसमें रेडनेस थी पूरा वो धीरे धीरे नीला पड़ रहा था। सो आई स्टार्टेड विद ओरल एंटीबायोटिक्स बट it was not improving and I had to immediately take her to the hospital for giving IV antibiotic. With God's grace IV antibiotic से टिटनस शॉट से उनका ये इन्फेक्शन कंट्रोल में आ गया और अभी लास्ट 4 days से शी इज ऑन द ओरल एंटीबायोटिक्स एंड अभी द फीट इज फाइन एंड शी इज ऑल्सो ट्रैवलिंग। सो many of us may accidentally have bites and bites can happen with bee stings. It can be even animal bites which can be with your pet cats or even dog bite. What should we do immediately to prevent infections? First, bite area pe we should wash it with soap and water because that will sterilize that area and also prevent spread of infections into the wound. So our body has bacteria and if suppose we rub the area which is breached, then the bacteria will enter inside. Also, bacteria may be present in the bees or even the animals like the cats, dogs, or monkeys. That can also spread inside through the wound. So, soap and water will prevent the spread of infection, including the rabies virus. So, do not squeeze, but clean it with soap and water. Second is it's important to prevent the infection. If suppose a prophylactic antibiotic can be given which will kill the bacteria and prevent the spread of infection. Third is a tetanus shot which will protect against tetanus. Fourth, if infection or if the bite is related to the cats, monkeys, dogs, then anti-rabies vaccination is recommended. Now, based on if you have received prior anti-rabies vaccination, then only 2 doses may be needed. But if you have not received vaccination prior, then full dose of rabies vaccination is needed. And for that, please do contact infectious diseases specialist. Sometimes it's like after the bite, some people can start having fever. So if fever is occurring following a cat scratch or a cat bite, it is indicative of certain other infections like Bartonella. And for that, it's important that proper investigations, sometimes serology or PCR has to be done, and it requires different antibiotic for the treatment. So please watch out for fever if there is a prior history of any bite. Rat bites do not cause rabies, so there is no need to worry. There's no need for any rabies vaccination. I hope this information will be useful and it will prevent you as well as your loved ones from getting infections following a bite, which can be accidental and can happen to anybody. This is Dr. Neha Gupta, infectious diseases specialist. Please do like, subscribe and share with your loved ones. अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें. Thank you so much.